12th from DV Public School, Rupnarayanpur, West Bengal. And thereafter, I did my graduation in law from National Law University, Ranchi in 2021. So this is my first attempt at Bihar Judicial Services. And so in my leisure time, I like to go on walks. Earlier, have you attempted this exam or not? No, so this is my first attempt. Okay. In any other, just like in Jharkhand, judicial service? Yes, sir. Yes, sir. I have attempted Jharkhand services and I have cleared the pre over there. Okay. Have you written the mains or not? Sir, the mains exams have not been held yet. Okay. मनीष अंकल अपना माइक ऑफ करेंगे. Yes, What is sir. it? So criminal justice system basically deals with the administration of justice, and it deals with the punishment, how the punishment is to be implemented, and the effect of such punishment to decrease the crime rate, and and sir, there are certain theories there, deterrent theory, retributive theory, reformative theory. So basically, it's a And application of okay. all these theories. And what are the main components of this criminal justice system? Who are the main components? Sorry, sir, I can't follow you. Components. That means I am saying when we talk about criminal justice system, it includes mainly three components. Can you mention that name? Sorry, sir, I can't Police, recall at the moment. police, judicial system, and prosecutor. Okay, sir. What's your post? APO, no? No, sir. APO, Civil judge, judicial civil magistrate judge. first class. Okay, okay, okay. What is the hierarchy? Uh, so the hierarchy is as follows. The Firstly we have the High Court. Thereunder we have the Court of Sessions, the District Court, and Hmm. after that the any court which is provided under the schedule of the first schedule of the CRPC to try the cases, and thereafter we have the courts of judicial magistrate first class. No, CJM no. is When also we a part talk of about judicial magistrate. district court, so Yes, sir. it is bifurcated into two parts. That is civil Yes, court sir. and criminal court. Then you say Yes, the sir. hierarchy. Hmm. Because in the civil court there is another hierarchy, and in the criminal court there is other hierarchy. There is other names. Just like when we talk about in criminal, Yes, sir. Mm. then we talk about session court, isn't Yes, it? sir. And Mm. when we talk about in regarding civil matters, then it is called district court. It is the highest court at the district level. Yes, sir. So judicial magistrate, sub judicial second class, first class are you mentioning? Yes, So sir. it is the hierarchy when you joined, then what will be the post at first time? At which Sir, it will be post? judicial magistrate first class. First class. Okay. Recently, you are seeing Vaishnavi encounter is increasing day by day, and its validation is also increasing by the public. Don't you think so? Yes, sir. So, is it really good and pertinent for the democracy and also the law and justice and also Uh, for the executive? What do you think? Sir, I think the practice should not be celebrated as is done by the public. The judiciary is there for a reason. It has to see the implementation of rule of law, which is also a part of the basic structure doctrine. So until and unless we can ascertain and determine that the accused is really has really committed the crime and has been convicted, then only we can decide upon his sentencing and the punishment. The law cannot be taken in the hands by the police, and they cannot dispense with the functions of the judiciary. Punishment is basically can be implemented by the judiciary itself, not by the police. So Execution what part are they the can do. steps? What are the steps to just mitigate, or you can say end up this validation, especially by the public? Because somewhere when we see the court and judicial system, because it also hampers the decision is also hampered somewhere when the pressure of media and also the public, Yes, sir. somewhere it is also influenced the decision. Don't you think so?
So how will you Indeed, mitigate sir. such validation of encounters? So What's firstly, I your think yeah, yes, okay. sir. So, firstly, I think there should be a guideline regarding media trial that is happening at a very rampant rate, and any case which any case they take up any case and they sensitize upon it, the public gets swayed by the emotions, and there is always a hue and a cry regarding it. So, recently in the Arjikar case, also we have seen. Uh, Previously in Hyderabad rape case also we had seen there was Yes. an encounter and was quite talked about. So firstly I think that certain guidelines should be there for media trials to stop the media trials and to stop the sensitization of any topic. And after Okay. that, sir, I also think that the law should be also at place regarding the transparency in the encounter in the police in the interaction between the police and the accused people. Bulldozer policy. Do you know about it? Yes, sir, recently it is quite Yeah. in the news, sir. Is quite in news, and also you see that every states are following. Yes, sir. Is it good? Is it pertinent for the judicial service, judicial system? No, sir. Sir, it is So not sir, again, what sir, will it the is step? Hmm. Uh, Yes. yes, sir. So recently, this case was this particular topic has been taken by the Honorable Supreme Court also, and any like-minded citizen of the country would say that it is wrong, because again the convicted people, again the accused people are again without determining the about the guilt of the person, the state is taking the action of bulldozing their house, and further, sir, bulldozing the house also impacts the other members of his family who are innocent of the crime. Further, sir, Okay. it is Okay. also not Got determined it. whether Got the it. accused has. There is a SRT. Suppose, as we know, we are in the era of artificial intelligence, and suppose you have owned a car, and there is a driverless car, and that driverless car is running in the London. But the programming software, which is operated by India in Bangalore, and the services, the vehicle company that is settled in the Germany. Got my Yes, point? sir. There is three Yes, sir. components. The car is running in London, that is driverless car, and that programming software is operated by Bangalore, and the vehicle company that is Germany based. So there are three components. Suppose that driverless car which is operated by AI, they met an accident, Mm. and that got injured or a spot death. What will happen? Okay, then what is the procedure of punishment and who will get punished? What do you think? What do you see says So according to the you? car is registered in London, and the accident has happened in Car London, is yeah, the car is running or registered in London, yes, and car is running, but and the the vehicle, software yeah, program is from India. from India, Bangalore, but the vehicle company that is by Germany. So Is who will be registered the in London. responsible? Yeah, registered in London. Uh, So what do you think? Judiciary, what will happen? What will do the judiciary? Who will get punishment? so the person. Um, so I have to think about it, sir. So right now I'm not in a competent position to do deal with it. It's okay. What is the difference between law and order? Sir, it can be said that law is the means by which order can be restored. So law is the means and order is the end. Law Order is is the the means and order is the end. Okay. yes, sir. And what are the difference between responsibility and accountability? Is it same? Sir, Because they are used you are a interchange. student of law, so I Yes, sir. think there is no any synonyms in law. Every word has a meaning, some meanings, Yes, isn't sir. it? Indeed, sir. Yeah. Yes, sir. That's why I'm asking. Difference between Mm. responsibility and accountability. Sir, sir, in my limited knowledge, which I can recall right now, I think responsibility is something that a person
the person has a duty to perform. And in case of accountability, the person takes the responsibility of the consequences which ensue from his or emanates from his commission of the crime or the act, or any dispensation of any action that he does. Okay. Do you think is it correct according to you? So currently, yes, sir. I think it's. Okay. Rupesh sir. ओके सर. लॉ के कुछ टर्म्स है वो उसके हिंदी ओके नहीं ओके, आता ठीक से. नो इशू नो इशू. ठीक. तो मुझे बताएं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? So, principle of natural justice can be understood as the minimum standard of principles which any court or tribunal must follow in order to dispense with justice. It comprises of three elements. Firstly, that no one can be a judge in his own case, nemo debet judex in sua causa, and audi alteram partem, that is, no one should be condemned without being heard. And the third element is speaking orders, that every order or the judgment that a court dispenses with or pronounces has to be reasoned. आपने कंटेम्प्ट का जिक्र किया, तो ये Yes, sir. बताइए कि सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है? Mm. Sir, so far that I can recall right now, हाँ. so criminal contempt is provided. The criminal contempt is dealt under section 345 of the CRPC, and civil contempt, sir. So sorry, sir, I have to read it up now. I कोर्ट ऑफ can't recall at रिकॉर्ड. the moment. Acha, yes, sir. Sir, yes, sir. Court of Records under Article 129, the Honorable Supreme Court, and under Article 215, the Honorable High Court are considered to be Court of Records, and they can punish anyone for their contempt. So, the civil contempt of courts emanates from the Constitution of India, whereas criminal contempt emanates from the CRPC and the IPC also. तो जो लोअर जुडिशरी है उसे कोर्ट ऑफ Yes, sir. कंटेम्प्ट करने का अधिकार नहीं है? Uh, Sir, directly there is no such power. The High Court can, yes, sir, the High Court can deal with it, with their contempt. I think it's provided under Article 234 of the Constitution. तो जो लोअर जुडिशरी है क्या वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है? No, sir, only High Courts and the Supreme Court. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के क्या फायदे हैं? Yes, sir. The court of record, by the virtue of being a court of record, the judgments that the court passes are considered to be evidences which can be cited in cases under similar circumstances and with similar circumstances and facts. And they can also punish anyone for their contempt. ऐसा कहा जाता है वैष्णवी कि जो भारत में Yes, sir. जजेज हैं, सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो, वो कुछ ही घरों से आ रहे हैं. Yes, sir. पूरी तरीके से जो है कि क्या कहते हैं आप उसमें? Yes, sir. यस यस. Nepotism. पूरी तरीके से नेपोटिज्म है. तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं? Uh, sir, I think that when nepotism, this is a debatable factor, but also we'll have to understand that there are certain positives to it also. Someone who is born in a family of judges, he has seen that person has seen his fathers, grandfathers dealing with justice, and they understand the nooks and the corners of the justice, and so I think that they are better placed in a position to do justice. That adds to the benefit, but also again this would also lead to monopolization, so we'll have to mitigate this factor. So transparency in the procedure of appointing judges should be adopted in the present collegium system. And so separation of power is another factor which needs to be taken care of. If we allow the executive to deal with the appointment of the judges, then that will lead to court packing. There was a similar practice that followed in the United States of America. We cannot let that happen in India. So, sir, in my opinion, there must be more transparency in the current collegium system, so that new people from different background can also get into judiciary. सुप्रीम कोर्ट के पास दो तरीके का क्या कहते हैं जुरिडिक्शन होता है. एक जुरिडिक्शन है एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन, एक है ओरिजिनल जुरिडिक्शन. तो एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन क्या होता है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है?
Sir, if I'm following you right, I think you're talking about special leave petition under Article 136, and original jurisdiction is provided under Article 131 of the Constitution. Okay. So, Tell me about REITs. writs. Habeas corpus. Yes, sir. What is habeas corpus? Yes, sir. Sir, habeas corpus is a Latin term. It is a judicial order by which the courts order the production of someone who has been kept in wrongful confinement. Mandamus. Uh, So mandamus is a judicial order which is issued by by the by the higher court to the lower court in order to reprimand them that they should do their they should continue lawful activities and not deal with illegal activities. Okay. Tell me about judges cases. First judges case, second judges case, third judges case, fourth judges case. Yes, sir. Sir, in the first judge's case, which was the SP Gupta versus Union of India, the term consultation in Article 124 of the Constitution, which provides that during the appointment of the judges, um, uh, the Chief Justice of India has to consult the President has to consult the Chief Justice of India, and in that case, the consultation was put up for question. It was held that the consultation here that the president that the consultation over here was dealt in such a way that it was made mandatory upon the president to no it was made sorry sir, I'll have to reframe this. Okay. So sir, the Second judge case. consultation was put up to challenge in this case, and it was held that the president is not bound by the decision of the Chief Justice of India, and the ultimate say in the matter would be that of the president. Later, sir, this case, the term consultation under Article 124 was again put up to question the second judge's case, and wherein the Supreme Court said the wherein the Supreme Court said that the consultation over here would be such as that the Chief Justice's a recommendation would hold water over that of the president. And Yes, then sir. third judge case. Uh, the third judge's case I can't recall at the moment. So was it the NJAC case? No. And Jack case was fourth judge case. थर्ड Sir, I जज can't केस. recall at the moment. ओके ओके. अभी जो कॉलेजियम सिस्टम है वो किस जज केस से आया है? एक थर्ड जजेज केस का ही आउटकम है कॉलेजियम सिस्टम. Oh yes, sir. तो लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? Yes, sir. It is the same as that of the president. That is impeachment. Sir, I can't recall the article number right now, but it is the same as that of impeachment of the president. Okay. One house levels the allegations the other house by passing a resolution, and then the other house acts as the investigating agency. And if they pass the resolution to remove the judge on those allegations leveled, then the judge has to vacate his position. किस ग्राउंड पे उसको रिमूव किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजों को? उनका ग्राउंड क्या होगा? Sir, violation of the constitutional provisions while acting as a judge. और Misconduct. ओके, योर इंटरव्यू इज ओवर. Okay, sir. Thank you, sir. वैष्णवी, कैसा Yes, रहा sir. आपका इंटरव्यू? कितना रेट करेंगे आप आउट ऑफ 10? Sir, I don't know. This was my first experience. फिर भी कितना, हाउ मच? क्या लगता है आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 8 6 7? 6. नहीं, 6 से बेहतर है. 7 8 कर सकते हैं. 7 तो जरूर है. बस थोड़ा जो आप बोल रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं, और बस थोड़ा सा अगर स्पीड स्लो हो सकता है, हल्का सा स्लो हो तो और बेहतर होगा. बाकी जो प्रश्न पूछा गया, रुपेश सर ने जो पूछा है, पॉलिटी और लॉ सब तो देखना ही है बेसिक. मैं जो इनकाउंटर वाला था तो आपने सही बताया, और ये जो प्रश्न था मैंने पूछा था एआई वाला, उसको देख लीजिएगा सर, क्या होगा उसका एक आंसर? बार. या तो आप बता पाएंगे ना बेहतर तरीके से. ये भी एआई वर्ल्ड की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं.
और दूसरी बात है कि अभी जो जिस एरा में हम लोग जा रहे हैं, स्पेशली साइबर वर्ल्ड की दुनिया में, तो वहाँ पे आप जस्टिस कैसे दिला पाएँगे? कितना अभी रिसेंटली क्या हुआ था उत्तराखंड में, बद्रीनाथ धाम के लिए बुक हो रहा था, सारा पैसा जा रहा था किसके पास? बिहार में बैठे हुए लोगों के पास। मतलब वेबसाइट ही हैक कर लिया साइबर क्राइम। उत्तराखंड को। हाँ, ये साइबर क्राइम। और तो इसमें सबसे बड़ी बात है चुनौतियाँ, जस्टिस कैसे आप उचित तरीके से दिला पाएँगे, ये भी एक चैलेंज है। ओवरबर्डन है केसेज़ का, पेंडिंग केसेज़ का, ये सभी प्रश्न है, सब उन्होंने पूछा। लेकिन ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो उसमें एक तो आपका एक एपीओ है, तो एपीओ वाला का जो आता है उसमें प्रोसिक्यूटर होता है, एपीओ, पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो 3, एक तो जुडिशियल सिस्टम है, जैसे आप हो गए जुडिशियल सर्विसेज से मान लीजिए, और एक एपीओ होता है, एक पुलिस होता है। पुलिस का काम है जो प्रोसीजर है आपका, उसको एफआईआर करना, एफआईआर के बाद चार्जशीट दायर करना, उसको हेल्प करना है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हेल्प करता है। और जुडिशियल सिस्टम में जो आप हैं उसमें रहेंगे तो उसमें न्याय दिलाना होता है। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं, उसको आप देख लेंगे। ओवरऑल अच्छा है। आपकी तो मतलब बस वही है, अभी तो रिवीजन करना है, अभी तो डेट भी नहीं आया। डेट आ गया क्या? हाँ डेट सर, नहीं है डेट ना आ अभी? गया है, डेट आ गया है। आ गया है डेट? 20th हाँ, नवंबर। यस सर। 28 नवंबर है। अच्छा, तभी आपके पास 1 महीने समय है। प्रैक्टिस में बस मैं कहूँगा थोड़ा-सा अगर हल्का स्लो हो सकता है तो ठीक है, स्पीड। ठीक है सर। बाकी बाकी अच्छा है, आप सब बोल रहे हो। स्पीड थोड़ी-सी कम कर सकते हैं और कंटेंट पढ़ते रहना है। ओवरऑल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। बिल्कुल। यस सर। वैष्णवी, बात करें तो आपका ड्रेसिंग सेंस, उस कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छा है, बस थोड़ा सा स्पीड पे ध्यान रखना है। उसके बाद आप बीच बीच में स्माइल करते हैं, हैंड मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड ही है लगभग। ठीक है, कभी कभी आप हैंड मूवमेंट करती हैं जिसको रिस्ट्रिक्ट रखना है। बाद बाकी आप बोलती बहुत अच्छा है, चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाती हैं। जो थोड़ी सी दिक्कतें दिख रही हैं वो ये है कि आप चीज़ों को रिकॉल अच्छे से बहुत शानदार तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि आप लॉ की स्टूडेंट हैं, तो उसमें जैसे कि आपने जब बताया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में, तो उसमें कुछ आपने जो है कि आर्टिकल्स को कोट किया। उसके बाद बहुत सारी जगहों पे देखा गया कि आर्टिकल मिसिंग, थोड़ा सा आर्टिकल को कोट करेंगे तो वो रेफरेंस समझने में बहुत आसानी हो जाती है हम लोगों को, हाँ इस आर्टिकल के पार्टिकुलरली बात कर रही है। उसके बाद फिर जब जजेस के केस के बारे में मैंने पूछा, तो जजेस के केस के बारे में आपने एक दूसरे को लगभग थोड़ा कहीं कहीं मिक्स करते गए, और जब आपके जो कॉन्सेप्ट जितना तक याद था उसके बाद खत्म हो गया था, आपने सॉरी बोला कि अब मुझे याद ही नहीं है। ठीक है, तो उनको बस देख लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और अदरवाइज आपने बहुत अच्छा बोला, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, नॉलेज का लेवल अच्छा है। और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, जैसे क्रिटिसिज्म ऑफ क्या कहते हैं ये, आपके एक साथी ही पूछ रहे हैं अभी, मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको सुनाता हूँ, आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अदरवाइज आप बहुत अच्छा बोलती हैं, और मैंने बताया भी वीक पॉइंट इसलिए क्योंकि आपके पास अभी समय है। 1 महीने आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। जब भी पॉइंट को रखें तो पॉइंट को एक एक करके, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इस तरीके से जब आप रखेंगे तो चीजें समझने में आसानी होती है। दूसरा, जब आपने बताया कि कॉलेजियम सिस्टम में इम्प्रूवमेंट क्या होना चाहिए, तो जो आप ब्रिटिश का सिस्टम आप बताना चाह रही थी, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते, चूंकि इसकी क्रिटिसिज्म बहुत हो रही है इंडिया में। तो ब्रिटिश सिस्टम में क्या है अपॉइंटमेंट का रूल, उसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते तो और भी बेहतर हो सकता था। अदरवाइज आपने काफी अच्छा बोला है चीजों को। और दूसरा है कि करंट अफेयर वगैरह पढ़ते रहना, और जो करंट में वैसी घटनाएं जो जुडिशरी से संबंधित घटते रहती हैं उसको देखते रहना। हम लोग जुडिशरी से जो करंट अफेयर की घटनाएं थी उसको बहुत पूछ नहीं पाए, क्योंकि लिमिटेड समय रहता है। ठीक है, फिर जब आगे इंटरव्यू लेंगे तो उसमें फिर इन चीजों को पूछने का हम लोग प्रयास जरूर करेंगे। अदरवाइज आप काफी अच्छा है, बोलती बेहतरीन है, और सब आपका अच्छा है। और जो है कि उम्मीद है कि आपका इस बार सिलेक्शन हो। आप बहुत काफी प्रोमिसिंग कैंडिडेट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऑल द बेस्ट थैंक यू आपको, सर। ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक और एक चीज़, यू। थैंक यू सर। एसआरटी में ब्लैंक नहीं होना है ना? प्रयास करना है कि उसमें ब्लैंक नहीं होंगे आप। हाँ, जब जब फैक्चुअल सिचुएशन प्रश्न आता सिलेक्शन, है तो आप फैक्चुअल में ब्लैंक हो जाइए, कोई इश्यू नहीं है, या रिकॉल सर, मैं आई विल रिकॉल सर, या नॉट रिकॉलिंग एट प्रेजेंट। लेकिन जब फैक्चुअल में चलता है, लेकिन कंसेप्चुअल प्रश्न में नहीं चलेगा। एसआरटी में तो बिल्कुल भी नहीं। तो उसमें आप बैलेंस कर देते हैं ना कि सर अगर मैं तो जहाँ रजिस्टर्ड है लंदन में, तो वहाँ की रिसर्च सिस्टम और जहाँ का जैसे ऑपरेटिंग हो रहा है, दोनों को मैं सर, दोनों उसके लिए तालमेल। ज़िम्मेवार हैं। हाँ, तो मैं दोनों को सर कोर्ट में बुलाना चाहूँ, दोनों को समन दिया जाएगा सर, और दोनों से पूछताछ की जाएगी। उसको पहले मतलब ऐसा बैलेंस्ड आंसर जो क्या होता है, यूनिवर्सल आंसर यही होता है।
हुँ, अभी तो जुडिशियल सिस्टम भी नहीं सोच पाई है या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं सोच पाया है कि इस एआई के वर्ल्ड में कितनी बड़ी चुनौतियाँ आने वाली है अभी। अभी हुँ, रिसेंटली कैलिफोर्निया एक बिल लाया था, जानकारी है आपको? नो सर। कैलिफोर्निया एक बिल लाया था, बहुत अच्छा बिल था वो एआई को रेगुलेशन करने के लिए। अब उसमें ये हुआ कि जितने भी आपके टाइकून हैं, चाहे गूगल हो, चाहे आपका मेटा है, सारे टाइकून ने उस बिल को ही पोस्टपोन करा दिया। क्योंकि वो क लोग कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह का बिल आए जो कि एआई रेगुलेशन करे, क्योंकि एआई इज़ नॉट परफेक्ट। हुँ, एआई क्या है? जो आप प्रोग्रामिंग दे रहे हैं, जो आपने प्रोग्रामिंग दिया उसी के आधार पे वो जजमेंट देती है। ऐसा हुँ, थोड़ी है कि वो अब मान लीजिए उसको प्रोग्रामिंग दिया गया, ऐसे बहुत सारे कंडीशन आ सकते हैं। तो हमें हुँ, उसको रीस्ट्रक्चर्ड करने की ज़रूरत है, उसको री-वेरीफ़ाई करने की ज़रूरत है। तो आप कुछ कुछ जो भी एसआरटी का जब भी प्रश्न आए, पॉइंट वाइज़ जो यूनिवर्सल आंसर होता है, जहाँ ब्लैंक हो जा रहे हैं बिल्कुल, जहाँ जानकारी है तो ठीक है, तो ठीक है उसको सर। थोड़ा-सा देखना है ना, बाकी बेहतर है। ऑल द हम्म, बेस्ट, बहुत अच्छा। बिल्कुल। थैंक यू सर। ओके।